Good morning, students. Today we are going to continue our chapter climate. So let's begin our chapter. Now, see, what do we mean by this one? The onset of monsoon and withdrawal of monsoon. The onset of monsoon means how in India monsoon arrives, and the withdrawal, how it leaves the country. For this thing, we have some separate few points. Let us see there. See here what is written. The onset of monsoon. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days. 100 to 120 days का मतलब होता है कि जून से लेकर मिड सितंबर ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के लिए इंडिया में हमें मानसून देखने को मिलता है. सो इट स्टेज फॉर द 100 to 120 डेज. सेकेंड पॉइंट क्या है? हाँ, ये बिल्कुल सही कि जून में हमें देखने को मिलता है मानसून, सितंबर तक हमारे पास मानसून सीजन जो है वो चलता है. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हमें? सडन इंक्रीज इन रेनफॉल. बिल्कुल सडन इंक्रीज हम देखते हैं कि अगर ये हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का, तो यहाँ से मानसून एंटर करता है इंडिया के अंदर फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला. यहाँ से इंक्रीज होता है सडनली एंड कंटिन्यू होता है कॉन्स्टेंटली एंड सेवरल डेज ये प्रोसीजर चलता रहता है कि इंडिया के अंदर एंटर करता है मानसून. ये कॉन्स्टेंटली आगे चलता रहता है और साथ ही काफ़ी दिनों तक, काफ़ी दिन ऑब्वियसली वी अंडरस्टूड हियर बाय सीइंग दैट द मानसून रन्स फॉर द 4 मंथ्स. तो ये कोई एक दिन, 2 दिन या एक महीने का प्रोसेस नहीं है. इट रन्स फॉर नियरली 4 मंथ्स. ओके. Next, the monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by in the first week of June. Yes, देखो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था इन द फर्स्ट पॉइंट कि जून के अंदर आता है. जून के अंदर वी says that from the 1st June फ्रॉम द 1st June मानसून एंटर्स इन इंडिया. जब 1st June में एंटर होता है तो कहाँ एंटर होता है? ये कहाँ होता है? केरला के अंदर ये सबसे पहले एंटर होता है हमारा मानसून. जब ये केरला के अंदर एंटर होता है तो व्हाट इज रिटर्न? सेम थिंग इट इज रिटर्न. सी इट अराइव्स. मानसून जो है वो अराइव होता है सदर्न स्ट्रिप के अंदर. सदर्न स्ट्रिप तो आप ये देखिए आप, ये अगर हमारा इंडिया का मैप है तो यह साउथ ही हो गया. यहाँ से हमारे साउथ वेस्ट मानसून आता है इंडिया में. हमें पता है कि इंडिया के अंदर मानसून कैसे होता है. साउथ वेस्ट मानसून हमारे इंडिया के अंदर होता है. तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ से सदर्न स्ट्रिप से आता है ये. येस, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. येस, इट इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ जून. जैसे हमने यहीं पे ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? सी ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ भी है. केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू विटनेस मानसून एट दिस टाइम. बिल्कुल सबसे पहला स्टेट कौन सा होता है? केरला होता है, जहाँ पे मानसून हमारी कंट्री के अंदर जहाँ से अराइव होता है. क्यों केरला होता है? क्योंकि हमारे इंडिया में जो मानसून होता है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है. एंड ड्यू टू दिस साउथ वेस्ट मानसून वी विल सी हियर दैट द फर्स्ट स्टेट द हियर इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज द केरला. सो द फर्स्टली द मानसून अराइव्स इन द सदर्न साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ आवर country. Next, then monsoon when divides into two branches, yes, that is the Arabian Sea and Bay of Bengal branch. Obviously, see here now, this is the this is the this is the southern part of the country. Now see the monsoon when the wind moves from here. Okay, this monsoon winds divides into two different branches. One branch is go from this side, that is the from Bay of Bengal side. We know very well there we have the Bay of Bengal, and here we have Arabian Sea. So one branch of the wind moves to this area and the second branch goes this way, like this way. Why it is going? Because we know here we have the coastal areas and then we have the mountains. So due to that the wind जस्ट फ्लो टू दिस डायरेक्शन. जैसे ही विंड यहाँ पे जो माउंटेन है हमारे वेस्टर्न घाट्स है उनसे जब टकराती है तो हवाई इधर की तरफ जाती है. एंड ड्यू टू दैट दिस विंड ब्रांचेज मूव्स इनटू द टू पार्ट्स. ये जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है. वन इज़ फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड सेकेंड इज इन द अरेबियन सी. So I hope this point is clear. Now see the next point. The Arabian Sea branches reaches Mumbai then 10 days later approximately the 10th of June. बिल्कुल देखो मुंबई अरेबियन सी से अभी मैंने आपको बोला दैट द साउथ वेस्ट मानसून कम्स लाइक दिस वे. वन ब्रांचेज गो टू द अरेबियन बे ऑफ बंगाल एंड द सेकेंड मूव्स फ्रॉम द अरेबियन सी. when it is moving from the Arabian Sea, we know here is the Maharashtra, the capital of Maharashtra here Mumbai. So it moves to the Mumbai 10 days later, firstly in the Kerala and then the 10 days later to the Mumbai. So this way the monsoon arrives in India. Now the next point,
See here, see the branch I was talking about the southwest monsoon, how it comes. One branch is, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1st June. See very clearly it is written here. You can see by zooming I am showing to you. See here it is written 1st June, and we know very well this is the state of Kerala. Fine. So the southwest monsoon starts from here. It enters in India from this way. One branch is moving like this way. See here, we know this side we have the Bay of Bengal, and see this is the Bay of Bengal. We know very well about this. So this is the Bay of Bengal. Okay. So one branch is moving from this side, and the next goes to Arabian Sea. This is the Arabian Sea. I hope it is clear now. One branch is moving like this way to Arabian Sea. इस तरीके से ये जाता है यहाँ से मुंबई, and then it goes to the Run of Kutch. I hope this is clear. Now let us see the next slide what it is saying. See now, withdrawal of monsoon. So I hope understood कि क्या होता है monsoon, onset monsoon. Onset monsoon means how the monsoon arrives in India. Clear? देखो मैं आपको एक पीछे एक पॉइंट बताना रह गया मेरा, सॉरी. See what do you mean by this point? This is known as an burst. क्या होता है ब्रस्ट? इट मीन्स वी डोंट से दैट द मानसून इज रेगुलरली रनिंग इन द इंडिया. ये एकदम से पहले इंक्रीज होता है, फिर कंटिन्यू चलता है, देन इट कॉन्स्टेंट्स फॉर द सेवरल डेज. इट मीन्स द मानसून इज नॉट रनिंग रेगुलरली. दिस इज द प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज द ब्रस्ट प्रोसेस. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. विड्रॉवल ऑफ मानसून का मतलब होता है दैट हाउ द मानसून लीव्स द कंट्री. सो द विड्रॉवल ऑफ मानसून बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय नियरली सेप्टेम्बर. यस, सी इफ दिस इज द मैप, सॉरी, if this is the map of India, if we see like this way the map is there. Okay, the one branch is moving like this way, second branch moves this side, and the withdrawal of the monsoon is northwest is part, or this part is the northwestern part of our country. Okay, so the withdrawal of the monsoon is seen from the northwestern part in the month of September. So clear this point. Next point, what the next point is saying, by mid October it goes from the northern half of the country. Yes, northern half of the country से मिड अक्टूबर में ये मानसून जो है वो हमें कम कम बारिश कहीं कहीं देखने को मिलती है. देन एंड विड्रोवल फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज बाय द अर्ली दिसंबर. यस, सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर हमें अर्ली दिसंबर तक हमें इसको देखने को मिलता है कि जो है वो विड्रोवल हो जाता है हमारे कंट्री के अंदर मानसून का. सी दिस इज द कंट्री, दिस वे द रेन इज मूविंग. ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ से ऊपर जाती है. हियर वी हैव द नॉर्दर्न पार्ट, फ्रॉम हेयर द विड्रोवल ऑफ रेनफॉल इज सीन. यहाँ से होता हुआ अक्टूबर में यहाँ तक देखने को मिलता है, और टिल द एंड ऑफ दिसंबर वी गेट इन द मंथ इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, दैट इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वी गेट द रेनफॉल. सो यू विल विटनेस, so you will witness rain in the part of Tamil Nadu, that is Chennai, in December. हाँ, हमारे अगर हम आपसे पूछा जाए that which states get rainfall in the month or in the winter season, या फिर अगर पूछा जाए that which states don't receive the rain during the time of monsoon, then we will see the state that don't receive the rainfall, that is Tamil Nadu. Tamil Nadu don't receive rainfall in the month of from June to September. जून टू सितंबर तक की रेनफॉल तमिलनाडु नहीं रिसीव करता. इट मीन्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मानसून it don't receive the rain. Tamil Nadu receives the rain in the month of December. Okay, this is only the state which receives the rainfall in the December month, not in the during the month of during the season of monsoon. So I hope this is clear. Next, see here, this is the equator line. Okay, southern hemisphere of the country. Southern hemisphere, northern hemisphere, this equator which is moving from this part. Next thing is, what do you mean by retreating monsoon? See, retreating का मतलब क्या होता है? Retreat, monsoon का वापिस आना इंडिया के अंदर.
Okay, we are again seeing that monsoon enters in the India, that is called retreating monsoon. Now what do we mean by retreating monsoon here? See, I said you that from the 1st June the monsoon arrives in the India, और ये अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग तरीके से मानसून रीच होता है. During the time of mid September and October, the rainfall in the northern part of the India, yeah, almost in the India, the withdrawal of the monsoon is seen. Now, the retreating monsoon मतलब monsoon वापस इंडिया में आता है due to the western नॉर्थ वेस्ट विंड्स की वजह से. ओके, द विंड्स विच मूव फ्रॉम द मेडिटेरियन सी. देखो हम आपको ये मैप दिखाते हैं. See here, we have here the Mediterranean Sea. See, this is the Mediterranean Sea. Fine. दिस इज़ द वर्ल्ड मैप. यही हमारा इंडिया है यहाँ पे पूरा. नाउ सी वी आर टॉकिंग अबाउट द रिट्रीटिंग मानसून. द विंड्स विच, देखो बारिश आती कैसे है कहीं पे भी, नॉट ओनली इन इंडिया बट एट एनी प्लेस, हाउ द रेन अराइव्स. बारिश आती कब है, क्यों आती है, कैसे आती है. बारिश हवा के साथ आती है. जब हवा जिस तरफ जाती है उसके साथ बारिश आती है. ओके, तो क्या होता है हमारे जब विंटर के अंदर हम देखते हैं तो विंटर के अंदर यहाँ से विंड पास होती है इस तरफ. ओके, तो जब विंड जहाँ पे जाती है हमें पता है कि रेनफॉल उसी के अकॉर्डिंग होती है, तो हवा के साथ विंड आती है. तो दिस इज द मेडिटेरियन सी. फ्रॉम हेयर द विंड मूव्स, तो दिस इज नॉन एज एन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. ओके, तो नॉर्थ वेस्ट विंड्स जो है वो यहाँ से अराइव होती है एंड इट एंटर्स टू इंडिया. नाउ सी दिस मैप आई एम शोइंग टू यू. अब ये मैप दिखाई दिया होगा आपको, समझ आया होगा. वहाँ से जो हवाएं नॉर्थ मेडिटेरियन सी से हम जो देख रहे थे, दैट विंड कम्स लाइक दिस वे, इट इज़ मूविंग टू द इंडिया. देखो हमने क्या बोला था आपको, दैट इन द इंडिया इन द विंटर टाइम ओनली दिस वन retreating monsoon is seen and the rainfall comes, wind moves from this part and सो दिस वेस्टर्न विंड्स आर मूविंग लाइक दिस वे. और ये देखो, अगर आप ये वेस्ट विंड देखोगे तो यहाँ पे कहाँ बारिश हो रही है, इंडिया में कहाँ है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, हिमालयाज है ये तो यहाँ पे तो ऑलरेडी स्नोफॉल होता है. क्लियर. तो यहाँ पे ये देखो, हाँ. सो दिस इज द विंड विच मूविंग लाइक दिस वे. सी हेयर इन द नॉर्दर्न पार्ट वी जस्ट, सॉरी यार, in northern part we have this one, this is already the Himalayan region. तो यहाँ पे तो अगर हवा जाएगी तो